A chilling murder has stunned Lucknow after a 21-year-old allegedly shot at his father, chopped the body into pieces and stored the torso in a blue drum inside their home. The accused, Akshat Pratap Singh, is charged with killing his father, Manvendra Singh, a liquor businessman, at their residence in the Ashiana area. Police say the crime followed a heated argument on the night of February 20th, reportedly over pressure to clear the NEET exam. According to investigators, the father and son had a fallout over the competitive medical entrance test. During the argument, Akshat allegedly fired a licensed rifle at his father. What followed has left the city shaken. Police say Akshat dragged the body, initially planned to dump it in the Gomti River, but failed due to the weight. He then bought a saw, dismembered the body, dumped the hands and legs in a separate area and stored the torso along with the head in a blue plastic drum found inside the house. The victim's minor daughter reportedly witnessed the aftermath but was allegedly threatened and confined for days. Akshat himself filed a missing persons complaint for his father. Acid has also been recovered from the house. Family members claim that the acid was allegedly used on the body after the murder in an attempt to destroy evidence. Akshat has been arrested and booked for murder and destruction of evidence. A shocking incident has happened in the state capital where a 21-year-old Akshat killed his own father, who was a businessman named Manvendra, and cut the pieces of his body and stored it in the blue drum. We are at the crime scene where that particular incident happened. This is that particular room where the incident happened, and you see the visuals out here as we are showing you the ground from the ground zero. Cameraman Sandeep Dubey will pan the camera towards this particular lock. As you see, the crime scene has been logged by the UP police, but the entire thing happened inside this particular room where the 21-year-old Akshat firstly killed his father by firing a bullet over his head, then cut his body in two parts and then stored it in a blue drum. Her daughter, Manvendra's daughter, came for the rescue, but she was also warned of killing if she spoke anything about this particular thing. शक नहीं किसी पे हुआ। हमने कहा चलो भाई मिसिंग फरवरी के बाद थाने गए, एप्लीकेशन दी। थाने में उनसे कहा कि भैया हम 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए हैं, आप किसी तरह उनको दीजिए, तलाश करिए। फिर उन्होंने नहीं सुना। फिर उसके बाद हम डीएसपी ऑफिस गए कल, तब फिर उन्होंने फिर एक्शन में आए, फिर उन्होंने अपनी छानबीन शुरू करी। छानबीन के बाद फिर क्या हुआ? छानबीन के बाद फिर वो हम थे नहीं, हम तलाश रहे थे कहीं ना कहीं। फिर यहाँ फिर वो आई पुलिस, उनको उठा के ले गई। अक्षत पर शक कब गया आप लोग? अक्षत पे शक नहीं गया, एंड पुलिस ने ढूंढा। हाँ, अक्षत पे कोई शक नहीं गया। आपका तो बचपन उन्हीं के साथ गया। बचपन क्या, हमारा 30 साल का साथ। ये प्री प्लान मर्डर किया है उसने, बेटे ने। क्या उसको ईगो हर्ट था, क्या प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं पता। कि इसी कमरे में थी और बेटी के सामने ही ये सारी वारदात हुई है। बेटी के सामने सारी वारदात हुई है। और बेटी का ये कहना है कि हमको डरा दिया गया था, भाई द्वारा कह दिया गया था कि तुम किसी से कहना नहीं, तुमको भी गोली मार देंगे। अभी 22 तारीख की कहानी, यही बनियान पहन के बैठे थे, अपने पिताजी को ढूंढ रहे थे। हाँ, ढूंढ रहे थे। FIR खुद करने गए थे वो। मतलब मर्डर हुआ 21 को, 22 को खुद ढूंढ रहे थे, खुद FIR करने गए हैं। आप लोगों से क्या कह रहे थे? कह रहे कि हमारे पिताजी दिख नहीं रहे, हमारे पिताजी दिख नहीं रहे हैं। आंखों में आंसू थे या केवल आंख में आंसू कुछ भी नहीं थी। बेटी का क्या रिएक्शन था? दिलचस्पी इस बात की भी है कि ठीक है, बेटी बिल्कुल साइलेंट है, एकदम सदमे में है। लग रहा है कि उसका भी कुछ हाथ हो ऐसा है।